Hello everyone. So I received a lot of requests to make an elaborate video about statement of purpose for IIT Delhi admission process. So before starting, I would give this two disclaimer. This is particularly for IIT Delhi. Second, this is from my perspective. So I don't know what is a good SOP because I'm still in my first year of PhD. I have just joined in January. But this approach, I'm going to share the approach which helped me get shortlisted for interview round. So I would strictly advise you that you take in consideration other people's perspective too, those who have also qualified their SOP round for IIT Delhi admission. So let me begin now. So what should be included in statement of purpose? So इसका नाम ही है statement of purpose, right? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब है कि आपका पर्पस क्या है. सो इट शुड इंक्लूड योर रिसर्च एजेंडा, लाइक व्हाई डू यू वांट टू परस्यू पीएचडी प्रोग्राम एंड हाउ डज इट फिट इनटू योर करियर गोल, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू, सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च एंड कंक्लूजन. नाउ ये तो पॉइंटर्स हैं, बट इसके अंदर क्या लिखना है? सो आई विल बी मेकिंग अ सीरीज ऑफ वीडियो फॉर टू क्लियर दैट कंफ्यूजन. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ तो बिफोर राइटिंग योर SOP, द क्वेश्चन इज कि मैं लिखूं किस पे, कैसे स्टार्ट करूं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट द एरिया you want to research. Now I'm going to talk about the management process. So management में there are areas like finance, marketing, HR, organizational behavior, information system management. So you have to pick the area which you are interested in. How do I know I'm interested in this particular area? So I'm going to share my experience. So I did major in finance and minor in marketing. I was totally confused, but I had interest in digital marketing towards the analytics end. So I picked my topic in digital marketing. Now, a lot of people said that why don't you go for finance? Finance में scope है. You have done masters in finance. How you're going to justify to it? So I had this clear thing that मैंने finance पढ़ा है और मुझे उतना interest नहीं आया. So I don't think I can study this subject for another 10 years or would be comfortable teaching. On the other hand, marketing के जो subjects हैं, that really interests me. या फिर digital marketing हो गया या something analytical. So that is something I was very much interested in. So my area was defined for me that मुझे तो digital marketing में ही करना है. Okay. Now next, think about the problems in that particular area. So उस area का problems क्या क्या हो सकते हैं? Like अगर now for me digital marketing was the subtopic. अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, लेट्स से दैट आपने अभी और क्लासिफाई नहीं किया, आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है या आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो अब उस एरिया में प्रॉब्लम्स क्या है, लाइक एंड देन गूगल टू फाइंड इफ दिस प्रॉब्लम हैज बीन एड्रेस्ड. सो से सपोजेटली से फिनेंस है, ठीक है. अब फिनेंस में आप पहले सब एरिया ढूंढो, ठीक है. सब एरिया हो गया जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो मैंने माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सब एरिया ले लिया. नाउ आई विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स pertaining to this area. So once I have figured out the problem, I will Google to find if this problem has been addressed or not, right? Then I will Google recent trends and tweak your topic accordingly. So I know आप बहुत confused हो गए होंगे. So I'm going to talk about there are two approaches to finding a topic. First approach is कि आपको एक area में interest है, आपने उस एरिया का लिटरेचर रिव्यू किया. सपोज आप माइक्रो फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो माइक्रो फाइनेंस का आपने गूगल किया कि क्या क्या रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या गूगल ट्रेंड्स हैं टॉपिक्स में. यू कैन सी क्या क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स है माइक्रो फाइनेंस में. देन यू रीड लिटरेचर टू द टॉपिक कि आपने पूरा कितने सारे एरियाज में पब्लिश हो गए हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट हैव ऑलरेडी बीन पब्लिश, उनके आप एब्स्ट्रैक्ट भरो. यू नीड नॉट रीड द इंटायर पेपर, विथ एब्स्ट्रैक्ट आपको समझ में आ जाएगा. एंड देन उसके बाद आपको व्हेन यू रीड द लिटरेचर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, यू रियलाइज कि ये रिसर्च गैप है, ये चीज में अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है. सो आई कैन वर्क ऑन this particular topic, and that is how you come to your topic.
Now this is one approach and this is the only approach जो मुझे पहले बताया गया था, but I did it very differently. So what I did, I tried to connect the dots from my surroundings. जैसे मेरा I was working part time with an edtech startup. So I knew कि एक edtech startup के बारे में क्या है. Then I was also into digital marketing. I was studying about digital marketing. So I know digital marketing क्या है. So there itself, I tried to find the problem क्या हो रही है अभी. What are the problems? So I tried to find the problem and then मैंने अपना topic पहले बना लिया था कि ये problem है. अब मैंने जब Google किया then I realized कि इसका तो इस पे तो बहुत कुछ already publish हो रखा है because this is very recent topic. Then I tweaked it. मतलब ना हाउ डू यू ट्वीक इट, तो ऑब्वियसली हर जोग्राफिक एरिया में वो रिसर्च नहीं हो रखा होता, या फिर यूएस में हो रखा है बट इंडिया में बिल्कुल ही डेमोग्राफी डिफरेंट है, बिल्कुल ही साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन डिफरेंट है. सो हाउ डज दैट वर्क इन इंडिया, राइट? So you can tweak your topic accordingly. So this is one approach. Obviously you will have to find one now also आप जब टॉपिक आप पिक कर रहे हो, see if it's relevant or not. No, relevant कैसे होता है? Either it is contributing to the existing literature, जो existing publication उसमें contribute कर रहा है, या फिर it is contributing to the society. So I would recommend to pick a topic which is anyway contributing to the, because you're from management background, so it is contributing to the industry, it is going to help the industry. If you're in organizational behavior, that topic can help you help the industry in improving their organization. It's solving a problem, basically solving a problem. Or if you're contributing to the society, so if it's solving a problem, it's the best topic one can have. Just don't pick a topic for the sake of picking a topic. So ये दो चीज ध्यान में रखना है. First, that it should contribute to the existing literature, and if not, then it should contribute to the society. So that is how you read the existing literature and then you find the research gap. So that's it for in this video. In the next video, I'm going to cover how to write the first paragraph or your SOP. Thank you.